Good morning, everyone. आज हमें मेंस मॉक टेस्ट जोटा ई वीक रे कंडक्ट हेतिला तार आंसर राइटिंग एंड डिस्कशन क्लास आज हमें नबा बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मते खाली टिके एटी क्लियर कर दियंतु कि मु जहाँ भी एनोटेट करूची जहाँ लिखुची ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे कि नहीं मुझे 60 सेकेंड्स दूची कि जड़े भी मते लाइव चैट रे कंफर्म कर देले अदरवाइज आई विल अज्यूम कि सब क्लियर अच्छी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड टू द डिस्कशन क्लास. ओके तो जने कहउछंदी सब क्लियर अच्छी ठीक अच्छी तो आज आम क्लास रे 6टा क्वेश्चन टोटल डिस्कस करबा 6 क्वेश्चंस ता भितरु 4टा हमर रहइबो 15 मार्क्स रो फर्स्ट 4 एंड लास्ट दीटा 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आमे गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रे एज यूजुअल जेमती डिस्कस करे करबा गोटे प्रॉपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दबा देन बॉडी रे कॉन्सेप्ट्स मु बुझेबी एंड से कॉन्सेप्ट्स गुडा ऑर्गेनाइज करबा थ्रू सब हेडिंग्स एंड अंडर द सब हेडिंग्स in bullet points, then we will conclude with an optimistic and forward looking conclusion. Okay, first question, and I will give some 10 to 15 seconds for each one of you to read and brainstorm the question before discussing. Classify different types of taxes in India and examine their role in achieving fiscal justice and economic redistribution. Always try before answering the question, always try to remember and always ki a related concepts पढ़ी नोट्स रे की क्लास रे एंड ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि क्वेश्चन र डिमांड कौन अच्छी और केतेटा पार्ट रे क्वेश्चन को एड्रेस करिवार अच्छी हैला ताहले जाय कि गोटे ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रिपेयर करि परिबे. क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया. फर्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया को क्लासिफाई करबा को कोजी फर्स्ट डिमांड. देन तांकर रोल को एग्जामाइन करबा को कहूजी इन अचीविंग फिस्कल जस्टिस एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन. ओके रोल ए दीटा पिलर रे केमिति से अचीव करछंदी. फर्स्ट द फिस्कल जस्टिस रे केमिति से तांकर रोल निभौछंदी एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन पय तांकर कोन रोल रहउची. इंट्रोडक्शन. मु सब बेले कहिची इंट्रोडक्शन शुड बी टू द पॉइंट डायरेक्ट एंड ब्रीफ. एमती नहीं कि गोटे पेज ही इंट्रोडक्शन लिखी आसले जेहेतु लिमिटेड पेज और लिमिटेड वर्ड लिमिट मिलूची तो बाकी जो एरियाज रहला ताकू बॉडी रे एड्रेस करबा को ना इनफ पेज थिबो ना इनफ वर्ड्स थिबे. सो इंट्रोडक्शन हमें कोन दबा जो टैक्सेस आमर अच्छी दे आर कंपल्सरी लेवीज. टैक्सेस ऊपर क्वेश्चन अच्छी तो टैक्स कोन टिके बुझेबा. कंपल्सरी लेवीज कहा द्वारा imposed by the state कौन पाई to raise revenue and revenue raise करके state करिवो कोन ताको public expenditure रे लगेइबो for public expenditure. ठीक अछि. इंडिया रे हमर टैक्सेशन सिस्टम कोन एटा constitutionally structured to ensure fiscal justice, reduce inequalities and to promote economic
redistribution. ओके जोटा कि एंड ए तीनटा जदि अचीव कर दिया जाउची ताहले सेटा लाइन रे कोन आसीबो कोन पे ए तीनटा जिंस को अचीव करबा को इंडिया रो जो टैक्स स्ट्रक्चर व्हाट इज इट्स एम टू achieve the ideals of a welfare state. फर्स्ट कहितला कि क्लासिफिकेशन पचारथिला तो आमे टिके क्लासिफिकेशन देखिबा टैक्सेस को केमिति क्लासिफाई करा जाउची फर्स्ट तो समस्त जानथिबे डायरेक्ट टैक्स हमरो थाए डायरेक्ट टैक्स देन सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड गोटे थर्ड कैटेगरी भी अछि taxes based on constitutional division এই তিনিটা রে टैक्सेस को क्लासिफाई करा जाय डायरेक्ट टैक्स कोन जो टैक्स गुडा दे आर डायरेक्टली borne by the person on whom they are imposed for example they are directly borne born रे एठी स्पेलिंग एमती हबो B O R N E डायरेक्टली borne by the person जहा ऊपरे से गुडी को इंपोज होची फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स रो कोन इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स वेल्थ टैक्स एटा को अबोलिश कर दिया जाइछि बट स्टिल एटा गोटे डायरेक्ट टैक्स थिला फीचर कोन ए माने प्रोग्रेसिव थांती तांको नेचर होची प्रोग्रेसिव नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव माने जेमती जेमती इनकम बढ़िबो तमरो टैक्स भी ता सहित बढ़ी चलतिबो ओके बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड जेमती इनडायरेक्ट बा जीएसटी रे जेमती शिफ्ट हुए सेमती हबनी बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इनडायरेक्ट टैक्स होची टैक्स लेविड ऑन गुड्स जो भी गुड्स बा सर्विसेज ऊपर लेवी होचंदी बर्डन टा शिफ्ट हबो एठी बर्डन शिफ्ट हे परिबनी डायरेक्ट क्लास रे टैक्स रे सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स रे कोन हबो बर्डन टा शिफ्ट हबो टू कंज्यूमर्स ओके एंड आर एग्जांपल कोन सबुठार बडो एग्जांपल दउची हमर जीएसटी देन कस्टम ड्यूटी आसीगला एक्साइज ड्यूटी आसिला जोडा एगुडा सब सब्जिम हे जाइछि जीएसटी अंडर रे एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एंड तार फीचर कोन कि जनरली एगुडिक रिग्रेसिव एंड वाइडर टैक्स बेस थर्ड कैटेगरी होची टैक्सेस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन माने यूनियन टैक्स किछिटा थिबो जोडा कि यूनियन देन स्टेट टैक्स थिबो एंड कनकरेंट बा शेयर्ड टैक्सेस थिबो एग्जांपल कोन यूनियन टैक्स होची जेंति इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल सेटा जीवनी एथरे कस्टम्स कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट टैक्स रे किए जिबे स्टेट जीएसटी एक्साइज ऑन अल्कोहल एंड स्टैम्प ड्यूटी भी जीवो देन कनकरेंट बा शेयर्ड टैक्सेस रे कोन जाउची जीएसटी जाउची जोटा सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी ओके एबे हमें देखिबा रोल आंकर कोन इन फिस्कल जस्टिस एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट रोल समस्त एटी नोट डाउन करिवे रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करिबारे आंकर बहुत बड़ रोल रही छी जेमती कि जो प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स रहिला से माने कोन करिवे जे मु कहितली कि इनकम बढ़िबा संगे टैक्स भी से माने अधिका देबे सो द डायरेक्ट टैक्सेस इंपोज हायर बर्डन ऑन द रिच ठीक अछि आ जो रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेलफेयर स्कीम्स इटी प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स देन जो वेलफेयर स्कीम
फंडेड बाय जो टैक्स फंडेड बाय द टैक्स जो रेवेन्यू आसुची ताको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाउची थ्रू वेलफेयर स्कीम्स फंडेड बाय टैक्स रेवेन्यूज. सेकंड पॉइंट कोन? सेकंड पॉइंट होची फाइनेंसिंग वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस. फाइनेंसिंग वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस. जो टैक्स रेवेन्यू आसुची से कौन सपोर्ट करुची? से एजुकेशन सपोर्ट करुची, हेल्थ भी सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन एगुड़ी का सब सपोर्ट करुची एंड ऑल्सो एनहांसेस द सोशल जस्टिस. जो अफर्मेटिव एक्शन को एनेबल करुची, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होची. थर्ड, रीजनल एंड वर्टिकल इक्विटी. रीजनल एंड वर्टिकल इक्विटी कौन? जो जीएसटी कंपेंसेशन बा फाइनेंस कमिशन जो हमर हैला से माने ट्रांसफर तांकर जो फाइनेंस कमिशन ट्रांसफर्स एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज. ओके. एंड वर्टिकल डेवोल्यूशन एटा कौन इंश्योर करे? वर्टिकल डेवोल्यूशन इंश्योर्स रिसोर्स फ्लो फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स. फोर्थ, हायर टैक्स बिहेवियरल एंड करेक्टिव रोल. एंड करेक्टिव रोल. जो हायर टैक्सेस जो लगा जाउची लग्जरी गुड्स उपरे, टोबैको आउ पोल्यूशन इंटेंसिव एक्टिविटीज उपरे. ओके. एंड एटा आउ कोन प्रमोट करची? प्रमोट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. कनक्लूड केमती करबा ये आंसर को? इंडिया रो जो टैक्सेशन सिस्टम रहिला थ्रू अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट जोड़ा मु ऊपर कहली कि केवल डायरेक्ट कि केवल इनडायरेक्ट टैक्स तो नो, इट्स अ मिक्स थ्रू अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस गोटे क्रुशियल रोल प्ले करूची इन प्रमोटिंग व्हाट? इन प्रमोटिंग फिस्कल जस्टिस एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन. फाइल किसी चैलेंजेस भी रही जेमती कि टैक्स इवेजन हैला, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा रिग्रेसिविटी एबी भी तारा परसिस्ट करूची. कंटिन्यूअस reforms can strengthen equity, efficiency, and inclusiveness in public finance. Okay. Question number 1 over. Now read question number 2. Analyze the composition of government expenditure in India. How does expenditure prioritization reflect developmental and welfare objectives? Read the question on your own. I'm giving 10 to 15 seconds. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहले आमे कोन बुझू? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होजी फाइनेंशियल आउटलेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल आउटलेस जोटा कि स्टेट इनकर करे टू परफॉर्म इट्स फंक्शन.
to perform its function. India रे composition और prioritization of public expenditure सी constitutional mandate को reflect करे of building a welfare oriented development state. आम इंडिया रो जो composition और prioritization रही public expenditure रो, it reflects what? It reflects the constitutional mandate of building a welfare oriented developmental state. Balancing growth, equity and macroeconomic stability. बॉडी रे कौन एड्रेस करिवा पचार थिला कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया. एक्सपेंडिचर बे पब्लिक एक्सपेंडिचर केते प्रकार थाए कंपोजिशन. फर्स्ट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें कहले कौन बुझू जो एक्सपेंडिचर को इनकर करे स्टेट बा गवर्नमेंट फॉर इट्स डे टू डे फंक्शनिंग. डे टू डे फंक्शनिंग ପାଇଁ ओके फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर कंपोनेंट्स कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रो. फर्स्ट होची इंटरेस्ट पेमेंट. गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट पे करियार थाए ऑन पब्लिक डेट. देन हमर आसीबो सैलरीज इथरे एंड पेंशन्स. तापरे इथरे हमर आसीबो सब्सिडीज जहाँ भी फूड फर्टिलाइजर पेट्रोलियम जहाँ भी सब्सिडीज मिलूची. ग्रांट्स आसीबो स्टेट्स मानक जो ग्रांट्स दिया जाउची से गुडी को भी आसीबो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे. तो नेचर होची यार कोन नेचर होची नॉन एसेट क्रिएटिंग. जहाँ भी ये कंपोनेंट्स देखिले एथिरे किछि भी गोटे एसेट क्रिएट होची कि नाही तो आर नेचर होची नॉन एसेट क्रिएटिंग. नॉन एसेट क्रिएटिंग किंतु वेलफेयर डिलीवरी पे गुडी को बहुत क्रुशियल. इंटरेस्ट पेमेंट हला सैलरी पेंशन सब्सिडीज गुडी को वेलफेयर डिलीवरी पे क्रुशियल. सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर होची जेमदी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उल्टा एटा होची एसेट क्रिएशन. जो जो एक्सपेंडिचर द्वारा एसेट क्रिएट हुए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हुए ताकू कुहा जाए सेगुडी को सब कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर रे आसंती. एसेट क्रिएशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ. फॉर एग्जांपल जेमदी इंफ्रास्ट्रक्चर. देन कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस हे गला हमर डिफेंस रे जहा खर्च होची. लोन्स लोन्स तेनी से जे भी दो बैंक दो गवर्नमेंट सरकार दो जहा भी दो लोन सब बेले एसेट रे गणा जाए सेटा लायबिलिटी नुहे. देन जहा भी एडवांसेस दिया जाउची स्टेट की पीएसयू को नेचर होची यार एसेट क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग जेहेतु लॉन्ग टर्म ग्रोथ होची ग्रोथ एनहांसिंग. ओके तापरे थर्ड हमर आसला प्लान वर्सेस नॉन प्लान. अर्लियर क्लासिफिकेशन एटा प्लान वर्सेस नॉन प्लान. प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन जमती कि लिंक करा जिबा को लिंक करा जाउतला 5 ईयर प्लान्स बा डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को. एंड नॉन प्लान कौन नॉन प्लान होची एडमिनिस्ट्रेटिव बा कमिटेड एक्सपेंडिचर. याको एबे रिप्लेस कर दिया जाइछि बाय आउटकम बेस्ड बजेटिंग. सो जस्ट खाली एटा मने रखिबे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमिटेड
एक्सपेंडिचर एगुड़िक आसला नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रे तापरे एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन और डेवलपमेंटल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट होची सोशल सेक्टर फोकस सोशल सेक्टर फोकस सोशल सेक्टर ऊपर केमिति फोकस करा जाए जेमति कि एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन को एथरे हायर एलोकेशन जदि हबो ताहले एटा गोटे कमिटमेंट शो करिवो टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैपिटल एक्सपेंडिचर जदि बढ़ा जाए रोड्स रेलवेज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एटा जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करिवो एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रो क्राउडिंग को भी सपोर्ट करिवो जॉब क्रिएशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग थर्ड इंक्लूसिव वेलफेयर मेजर्स जो टारगेटेड सब्सिडीज दिया जाउची और जो डीबीटी स्कीम दिया जाउची टू पुअर एंड वल्नरेबल फूड सिक्योरिटी हाउसिंग रूरल लाइवलीहुड्स ऊपर अधिक फोकस करा जाउची और करा जुआ भी दरकार फेडरल बैलेंस एंड रीजनल इक्विटी फाइनेंस कमिशन थ्रू रु जो ट्रांसफर होची एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एडिको इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट रो जो डिस्पैरिटीज रहिला ताकू एड्रेस करूची कंक्लूजन जो कंपोजिशन एंड प्रायोरिटाइजेशन रही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रो इन इंडिया सेटा एटा डेमोन्स्ट्रेट करे कि गोटे कॉन्शियस एफर्ट निया जाउची टू अलाइन द फिस्कल पॉलिसी with development and welfare objectives okay and जदि शिफ्ट को इंक्रीज करा जिवो फोकस को इंक्रीज करा जिवो टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर while sustaining social sector spending social sector spending ताहले इंडिया गोटे इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमिक रेजिलियंस आउ सोशल जस्टिस अचीव करि परिबो it will lead to what it will lead to inclusive growth economic resilience and social justice next question read karo Ashoka's policy of dhamma was not merely a moral doctrine but a tool of governance critically examine डायरेक्ट क्वेश्चन अछि एतरे सेमती किछि कॉन्सेप्ट नाही इंट्रोडक्शन रे आमे अशोकंकर धाम विषय रे कहिछि त द एम्परर अशोकंकर धाम विषय रे आमे ब्रीफली इंट्रोड्यूस करिबा
Ashoka's Dharma is often portrayed as a moral, ethical doctrine inspired by Buddhism. However, ଯଦି ଆମେ ଅଶୋକାନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ କୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବା, ଅଶୋକାନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ କୁ, ତାହେଲେ ଏଟା ଅଶୋକାନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରିଭିଲ୍ କରେ କି ଯୋଉ ଧାମ ରହିଛି, it functioned as a pragmatic instrument of governance. Aimed at consolidating imperial authority. Imperial authority, ensuring social harmony, and stabilizing Mauryan state after the Kalinga War. धाम को केमिति टूल ऑफ गवर्नेंस हिसाब रे देखा जाए सेटा हमें डिस्कस करिबा. धाम as tool of governance. First होची political integration of a diverse empire. गोटे diverse empire रो केमिति political integration हला. of a diverse empire. जो मौर्यन एम्पायर थिला से बहुत सारा रिलीजन कल्चर एथनिक ग्रुप से मैंने समस्ते रहउतिले तो धाम प्रमोटेड देम. इट प्रमोटेड टॉलरेंस अमंग द सेक्ट्स सेक्शंस जो रहउतिले टॉलरेंस फर्स्ट तो टॉलरेंस एथि प्रमोट करा जाउतिला. ओके एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड अथॉरिटी टॉलरेंस आउ रिस्पेक्ट प्रमोट करा जाउतला. तो सेटा गोटे शेयर्ड एथिकल फ्रेमवर्क को क्रिएट कला विदाउट इम्पोजिंग बुद्धिज्म. सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल मेथड्स. फर्स्ट तो जो माने धाम महामत्तज तांकर जेतेबेले अपॉइंटमेंट करा गला एमाने होचंदी सेही ऑफिशियल. फर्स्ट मैं एठी लिखि दोची अपॉइंटमेंट ऑफ धाम महामत्तज. एमाने होचंदी ऑफिशियल एक्चुअली जो मानकर टास्क होची कि से माने मोरल सुपरविजन करिवे एंड वेलफेयर प्रमोट करिवे. सो वर्क अक्रॉस प्रोविंसेस से माने अक्रॉस द प्रोविंसेस वर्क करूथिले सब सोशल ग्रुप रे मिसी के से माने वर्क करूथिले. रेगुलर टूर करूथिले. रेगुलर टूर को कोन कहयतला धाम यात्रास. देन आउ कोन होतला accessibility emphasize बेसी दिया जाउतला on accessibility of the king and grievance redressal. And grievance redressal. Okay. Third
थर्ड कौन थिला सोशल ऑर्डर एंड पब्लिक वेलफेयर टिके देखिबा सोशल ऑर्डर एंड पब्लिक वेलफेयर कौन थिला से माने दे वर बिग एडवोकेट्स ऑफ नॉन वायलेंस compassion and restraint. Okay. And state ro involvement thila in medical facilities for humans and animals. Planting of trees, digging of wells, roadside amenities, etc. etc. And state ro legitimacy reinforce hotla through welfare orientation. Fourth, diplomatic and imperial legitimacy. धाम सी गोटे सॉफ्ट पावर टूल हिसाब रे वर्क करूथिला जेमति कि हेलेनिस्टिक रूलर्स मानकु मेसेज सेंड होतला Hellenistic rulers and neighboring kingdoms. तो जेटा अशोकंकर इमेज को एनहांस करतला एज धार्मिक चक्रवर्ती नॉट एज अ कनकरर अशोक एज धार्मिक चक्रवर्ती किछि क्रिटिकल इवैल्यूएशन जदि हमें करिबा ए जिंसर ताहाले तार किछि स्ट्रेंथ अछि एंड किछि लिमिटेशन अछि क्रिटिकल इवैल्यूएशन रे स्ट्रेंथ किछि अछि देन लिमिटेशंस भी अछि ए जिंसर स्ट्रेंथ कोन कि ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होतला ताको रिड्यूस कला इट रिड्यूस्ड सोशल कॉन्फ्लिक्ट जोटा पोस्ट वार एम्पायर रे क्रिएट हला सोशल कॉन्फ्लिक्ट ताको रिड्यूस कला एंड स्टेट पावर को मोरलाइज्ड कला विदाउट कोअर्सिव रिलीजियस एनफोर्समेंट moralized state power and what are the limitations now limitations थिला कि ओवर आइडियलाइजेशन हे गला नॉन वायलेंस रो जोटा कि मिलिटरी विगर को वीकेन गला डिक्रीज ऑफ मिलिटरी विगर देन धामर जो इफेक्टिवनेस थिला सेटा हेवीली डिपेंड होतला ऑन अशोकस पर्सनल अथॉरिटी डिपेंडेंट ऑन अशोकस पर्सनल अथॉरिटी देन लॉन्ग टर्म जो इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी थिला तांकर डेथ परे सेटा भी लिमिट हे गला इट लिमिटेड द लॉन्ग टर्म institutional continuity now we will conclude conclusion कोन अशोकंकर जो धाम थिला आमे देखिले कि सेटा गोटे फार मोर देन पर्सनल मोरल क्रीड थिला इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नेंस जहार एम थिला पॉलिटिकल इंटीग्रेशन administrative discipline and welfare legitimization जेतबळे एथिकली एलिवेटेड व्हाइल एथिकली एलिवेटेड तार जो डिपेंडेंस थिला रूलर कर करिश्मा कारिश्मा ऊपर जो
अशोकंकर कैरिस्मा उपरे से तार ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस कला एज अ गवर्निंग फ्रेमवर्क जोटा आमे उपरे क्रिटिकल इवैल्यूएशन रे नोटिस कले देखिले. Next question. Examine the significance of Kalinga War in shaping Ashoka's internal and external policies. Kalinga War केबे हितला 261 BCE. एटा मार्क कला कि गोटे डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट इन एम्परर अशोकंकर रियाइन रे and the unprecedented scale of violence and human suffering. It transformed Ashoka's outlook profoundly. तापरे कौन हैला इंटरनल गवर्नेंस कैरी आउट हैला एंड एक्सटर्नल रिलेशंस रे भी चेंजेस देखा वाला. Shaped both internal governance and external relations and redefine the nature of Mauryan imperialism. Impact. Kalinga War ro kon impact thila on Ashoka's policy? First, moral and ideological transformation. मोरल एंड आइडियोलॉजिकल अशोकंकर जो रिमोर्स थिला जो अनुताप थिला एटा एक्सप्लिसिटली मेंशन हेची रॉक एडिक्ट 13th रे. रिमोर्स देन तांकर जो मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट दिग्विजय रु शिफ्ट कले से मोरल कॉन्क्वेस्ट प्रति धाम विजय शिफ्ट देखा गला दिग्विजय टू धाम विजय. ओके देन एम्फासाइज दिया गला कंपैशन उपरे नॉन वायलेंस उपरे टॉलरेंस उपरे. आमे प्रीवियस क्वेश्चन रे सेगुडी को देखिचे ताकू भी एथरे आ अंडर रे लिखि परिबे. नॉन वायलेंस कंपैशन एंड आउडे कोन टॉलरेंस. Administrative reorientation. Administrative reorientation जो धामा महामत्तज क्रिएट हैला टू प्रमोट एथिकल गवर्नेंस एंड वेलफेयर. क्रिएशन ऑफ धामा महामत्तज. ओके जो रॉयल प्लेजर टूर्स थिला ताकू धाम यात्राज रे रिप्लेस करा गला. देन ग्रेटर स्ट्रेस दिया गला ऑन जस्टिस, humane treatment of prisoners and king's accountability. Third, welfare oriented state.
वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट ऊपर फोकस करागला जो एक्सपेंशन करागला पब्लिक वेलफेयर मेजर्स जेमती कि ह्यूमन्स और एनिमल्स मानक पई हॉस्पिटल्स हला फर्स्ट पॉइंट रे देखिले रोड्स वेल्स रेस्ट हाउसेस तो एटा मोरालिटी को इंटीग्रेट कला विथ स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड तंगर इम्पैक्ट एक्सटर्नल पॉलिसीज रे कोन थिला what was the impact on external policies ashoka's external policy first point hoji abandonment of aggressive expansion कोन टेरिटोरियल एक्सपेंशन आउ मिलिटरी कन्क्वेस्ट करके टेरिटोरियल एक्सपैंड टेरिटोरी को निजर एक्सपैंड से माने करिवेनी सेथि प्रति सेटा को से अबैंडन कर देले अबैंडनमेंट ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन किछि भी टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट हबनी आफ्टर कलिंग किछि भी हेला भी नहीं एंड प्रिफर कले से माने कि गोटे पीसफुल कोएक्जिस्टेंस ओवर वॉरफेयर सेकंड पॉइंट डिप्लोमेटिक आउटरीच एंड सॉफ्ट पावर आउटरीच एंड सॉफ्ट पावर जो धाम मेसेज थिला ताकू ट्रांसमिशन करिबारे टू नेबरिंग रीजन्स एंड हेलेनिस्टिक किंगडम्स इसटा करागला धामर मेसेज को ट्रांसफर करागला एनवॉयस मान को यूज करागला इंस्टेड ऑफ आर्मीज टू प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस बफर स्टेट स्ट्रेटजी buffer state strategy friendly relation established karagala with frontier states to ensure stability without annexation military hostility को भी reduce karagala किंतु defense preparedness से माने continue रखितले किंतु military hostility reduce karagala critical assessment जब देखिबा कलिंग war ये मॉडर्न मिलिटरी apparatus को entirely dismantle कलानी बस खाली सेटा रिड्यूस हैला अशोकंकर जो पैसिफिज्म थिला वाज प्रैग्मेटिक रादर देन एब्सोल्यूट सो बैलेंसिंग एथिक्स विथ सिक्योरिटी तांकर जो पैसिफिज्म वाज pragmatic rather than absolute okay and policy shift जो depended heavily on ashoka's personal conviction conclusion जो कलिंग war एटा फंडामेंटली अशोकंकर जो विजन थिला ताको रीशेप कला ऑफ रूलरशिप ट्रांसफॉर्म कला तांको फ्रॉम अ कनकरर टू अ मोरल एडमिनिस्ट्रेटिव सोवरेन मोरल एडमिनिस्ट्रेटिव सोवरेन एंड ए जो मॉरियन पॉलिसीज थिला ताको रीओरिएंट कला जोड़ी आगुरु कोअर्सिव थिला टू एथिकल गवर्नेंस एंड डिप्लोमेटिक engagement then leaving a lasting legacy in Indian political thought. Read the next question. Discuss the constitutional provisions related to prohibition of discrimination. To what extent have affirmative actions addressed structural inequalities?
क्वेश्चन कही जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रही रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ताको डिस्कस करने को एंड टू व्हाट एक्सटेंट को पर्यंत जो अफर्मेटिव एक्शंस निया जाउची सेगुड़िका स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करि परिचे। इंट्रोडक्शन ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गोटे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को एम्बॉडी करे व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ओके जोड़ा जो हिस्टोरिकली जो माने डिस्क्रिमिनेट होते ताको डिसमेंटल करिबारे रिलेटेड टू कास्ट रिलीजन जेंडर एंड सोशल हायरार्की एटा बहुत हेल्पफुल। सो डिसमेंटलिंग historical discrimination related to caste, religion, gender and social hierarchy. Alongside से discrimination को prohibit भी करे, it authorizes affirmative action to correct the structural and systemic inequalities. Constitutional provisions on prohibition and discrimination. First होची Article 14. Article 14 कौन हुए? Equality before law. Equality before law. It guarantees equality before law and equal protection of laws. And एटा reasonable classification को allow करे to achieve substantive equality. तापरे हमर को आर्टिकल आसीबो आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 itself says कि discrimination prohibit हबा दरकार. Prohibition of discrimination. ओके एटा डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करे ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन हैला रेस हैला कास्ट हैला सेक्स हैला एंड प्लेस ऑफ बर्थ. रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ओके एंड ये स्पेशल प्रोविजन को किसी एनेबल करिछि जेमति वुमेन आउ चिल्ड्रन मानक पई 15 क्लॉज 3 रे प्रोविजन्स अछि एंड एससीबीसी मानक पई एससीबीसीज एससीज एंड एसटीज हे गले ए मानक पई 15 क्लॉज 4 15 क्लॉज 5 एंड 15 क्लॉज 6 रे किसी स्पेशल प्रोविजन्स एनेबल करा जाइछि. आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 कौन हुए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो एटा इक्वल अपॉर्चुनिटी को एंश्योर करूची इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट. रिजर्वेशन को एटा परमिट करे इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. लास्ट
लास्ट नुहे आर्टिकल 17 abolition of untouchability. अनटचेबिलिटी को अबलिश करिवार कथा एटी मेंशन हेची इन ऑल फॉर्म्स. ओके, एनफोर्सेबल थ्रू पेनल लॉ. देन आर्टिकल आमर आसिला आर्टिकल 18 लास्ट abolition of titles. तो एटा क्रिएशन जो गोटे क्रिएट करूची गोटे आर्टिफिशियल सोशल हायरार्की एटा ताको प्रिवेंट करे. एंड अफर्मेटिव एक्शन एंड एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज. addressing social inequalities. First होची achievements. achievements देखिबा जो रिप्रेजेंटेशन रहिला एससीज मानकर एसटीज मानकर ओबीसी हेई गले वुमेन हेई गले तांकर इंप्रूव हेची रिप्रेजेंटेशन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो तांको एनहांस access मिली टू एजुकेशन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड स्टेट रिसोर्सेस. सो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस रहिला सेटा वॉइस और विजिबिलिटी को स्ट्रेंथन करिची ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल. सेकंड लिमिटेशन कौन कि ये जो बेनिफिटटा प्रोवाइड होउची एटा ऑफन क्रीमी लेयर को भी पड़ाए. क्रीमी लेयर. ओके, सो एक्सक्लूडिंग द मोस्ट डिप्राइव्ड. किछि गैप्स परसिस्ट करूची इन प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट रे हेल्थ रे एंड सोशल मोबिलिटी रे. सोशल डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू होची डिस्पाइट जहाँ भी लीगल सेफगार्ड्स मिलू. थर्ड जुडिशियल एंड पॉलिसी बैलेंसिंग. जो कोर्ट्स थिला से एम्फसाइज बेसिक करछन्ती ऑन रिजनेबलनेस एफिशिएंसी एंड पीरियडिक रिव्यू. शिफ्ट टुवर्ड्स टारगेटेड एंड नीड बेस्ड इंक्लूजन. कंक्लूजन जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशंस प्रोवाइड होची टू एन्श्योर constitutional prohibitions to ensure formal equality, affirmative action, formal equality, affirmative action through रू कौन seek करा जाए substantive equality. माने correcting historical injustices and through significant progress has been made. दो significance किछि significance progress भी निया हेइछि. Enduring structural inequalities demand continuous refinement of affirmative action. Affirmative action रो continuous refinement रो need रहिछि through data driven inclusive and holistic social policies. Last question. Critically evaluate the definition of state under Article 12 in the light of judicial interpretations.
आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन एंड आर्टिकल 12 अंडर रे कोन आसे आर्टिकल 12 अंडर रे आसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्वेश्चन रे भी मेंशन है जी फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स तार जो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन बा डेफिनेशन रही जी से डेफिनेशन टा होची लिमिटेड किंतु जुडिशियल इंटरप्रिटेशन द्वारा ताको सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करा जाइछि तार स्कोप भी एक्सपैंड हेछि टू एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आर नॉट डिफीटेड बाय डेलीगेशन प्राइवेटाइजेशन और फंक्शनल आउटसोर्सिंग टेक्सचुअल स्कोप टिके देखिबा व्हाट इज द टेक्सचुअल स्कोप आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 अंडर रे स्टेट रो जो डेफिनेशन रही से स्टेट रो डेफिनेशन कोन माने स्टेट अंडर स्टेट कहले हमें कोन बुझू स्टेट अंडर रे जानती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सिमिलरली government and legislature of each state तापरे local authorities other authorities जो माने कि टेरिटोरी भितरे अछंती ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ए जो फ्रेज ता रहिला अदर अथॉरिटीज सेटा इट हैज बीन द प्राइमरी साइट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन okay judicial expansion of state first point functional and instrumentality approach functional and instrumentality approach court shifted from narrow statutory test to functional test से माने narrow statutory test ru shift करूचंदी towards a functional state जो बॉडीज गुडी को परफॉर्म करूचंदी पब्लिक फंक्शंस और गवर्नमेंटल पावर एक्सरसाइज करूचंदी सेमान को भी आर्टिकल 12 अंडर रे अणा जाईची सेकंड पॉइंट इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी टेस्ट एंड एटा को एटी गोटे केस मने रखिबे वेरी इंपोर्टेंट अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब developed in this one कि complete or deep state control second point financial dependence on government third public importance thibo of functions public importance of functions and गोटे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हिसाब रे ओरिजिन हेतिबो ओरिजिन एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इवन सोसाइटीज और रजिस्टर्ड सोसाइटीज भी स्टेट हिसाब रे क्वालिफाई होंती qualify as state public duty test
एटा नेचर ऑफ फंक्शन ऊपर बेसी एम्फसाइज करे रादर दैन फॉर्म। जो बॉडीज पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज करूचंदी अफेक्टिंग राइट्स से माने दे मे अट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी। लिमिटेशन कौन? What are the limits and judicial restraint? Limits and judicial restraint. First, the exclusion of purely private bodies. Purely private bodies को एठू बाहर रखा जाइए। जो प्राइवेट एंटिटीज रहिले जो मानकर ऊपर स्टेट रो कोनसी कंट्रोल नाही और पब्लिक फंक्शंस भी एक्सक्लूड सेतरु रखा जाइए। तो खाली स्टेट रो फंक्शंस को मियरली रेगुलेट कले एटा सफिशिएंट नुहे। सेकंड, बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। कोर्ट्स कॉशियस टू अवॉइड ओवर एक्सपेंशन जोटा कि प्राइवेट ऑटोनॉमी को डाइल्यूट करि पारे एंड कोर्ट्स मानक ऊपर भी गोटे बर्डन आसी पारे विथ एक्सेसिव रिट पिटिशंस। क्रिटिकल इवैल्यूएशन रो स्ट्रेंथ एंड कंसर्न दीटा देखिबा। स्ट्रेंथ रे कोन कि एटा स्टेट को प्रिवेंट करूची फ्रॉम इवेडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। प्रिवेंट्स स्टेट। सेकेंड कौन कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्टिव रखुची इन चेंजिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। कंसर्न इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन अक्रॉस द केसेस। देन अनसर्टेनिटीज अछि uncertainty of entities cooperating in the public private spaces. Conclusion, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अछि आर्टिकल 12 रो सेटा ट्रांसफॉर्म इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू डायनामिक एंड पर्पसिव कॉन्सेप्ट। ओके जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को अलाइन करूची विथ कंटेम्पररी गवर्नेंस रियलिटीज। Contemporary realities. While expansion has strengthened rights protection, clear doctrinal consistency, maybe it's needed to balance the state responsibility and private autonomy. Okay, so आ सहित आम आज 6टा जाक क्वेश्चन डिस्कस कले। फर्स्ट 4टा 15 मार्क्स थिला एंड लास्ट दीटा 20 मार्क्स थिला। मोटा ऑलरेडी भी कहितली बिफोर वी एंड सब बळे एटा मने रखिबे कि कांसेप्ट केवल अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट मैटर्स मोर देन कवरिंग मेनी टॉपिक्स। जहाँ भी एग्जाम पाई कि रेलेवेंट नोट्स हो कि बुक हो गोटिए ऊपर सब बेले रिलाय करिवे रादर दैन कवरिंग मेनी बुक्स एंड कवरिंग देम वंस। जहाँ भी आज हमें डिस्कस करिजे ताकू रिवाइज करिवे कामली एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विथ प्रीवियस टॉपिक्स। जहाँ भी स्टैटिक टॉपिक्स संगे ताकू ब्रेनस्टॉर्म करि परिबे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करि परिबे। ओके,
So that is it for today. Thank you. Next class रे आमे another 6 questions discuss करिबा. So I hope समस्ते mock test दउथिबे, practice करुथिबे. Okay, thank you.